पुण्यात व्यसनमुक्तीसाठी पुनर्वसन केंद्र असलेल्या समर्पणचा शुभारंभ चित्रपट दिग्दर्शक महेश भट आणि अभिनेत्री आणि दिग्दर्शिका पूजा भट यांच्या हस्ते करण्यात आला आहे। समर्पण हे मानसिक आरोग्य आणि व्यसनाचा सामना करणाऱ्यांच्या उपचारासाठी आशेचा किरण असून पुण्यात स्थित समर्पण हे भारतातील पहिले पुनर्वसन केंद्र आहे जे व्यसनमुक्ती, मानसिक आरोग्य आणि आरोग्य सेवा देते। समर्पण रुग्णांची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवून आरोग्य, योगासने, योग्य आहार आणि ध्यान याविषयी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाद्वारे मानसोपचार आणि समुपदेशनाच्या मिश्रणाद्वारे समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करते। समर्पण हा आशेचा नवा प्रकाश आहे असं महेश भट यांनी इथे सांगितलं। दारूपासून मुक्त होण्यासाठी आपल्याला स्वतःच पावले उचलावी लागतील, दृढ इरादा करावा लागेल। राहुल वाजपेयी यांनी समर्पणसारखे केंद्र सुरू केले आहे याचा मला खूप आनंद असल्याचं त्यांनी सांगितलं। मला आणि पूजाला या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनासाठी आमंत्रित केले कारण आम्ही सेलिब्रिटी आहोत म्हणून नाही, तर आम्हाला दारूचे वाईट व्यसन आणि सवय लागली होती, त्यातून आम्ही सुटलो। वेदनेतूनच मोती चमकतो। समर्पणसारखी सुविधा सुरू केल्याबद्दल मी त्यांच्याशी संबंधित सर्व लोकांचे अभिनंदन करतो असंही ते म्हणाले। दर्द की कोख से ही हर बड़ी बात का जन्म होता है और उसमें ऊर्जा इतनी है कि ये सोच, अगर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम मुंबई से आए हैं संडे को, इसलिए आए क्योंकि हमको लगता है कि ये जो दिशा जो है ये सही दिशा इन्होंने पकड़ी है, जहाँ पर ये चलकर एक एग्जाम्पल बनना चाहते हैं कि रिकवरी जो है वो एक मल्टी फेस्ड एक प्रोग्राम के ज़रिए ही आप अपने आप को वापस ज़िंदगी से जोड़ पाएंगे। अब ये कहना कि क्योंकि ये एक तबके के लिए ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ये सच्चाई तो है, मगर क्या वो वहीं तक सीमित हो रहेगी? मेरे ख्याल में नहीं। अगर इनका आप इतिहास उठा के देखें तो ये बात इनकी शुरू हुई यहाँ से, इनकी बात शुरू हुई यहाँ से, मगर देखिए अच्छी बात जो होती है वो फिर आग की तरह फैलती है। यही लोग हैं जो आगे चल के इसको बहुत ही रीजनेबल पैकेजेस में और लोगों के लिए भी अवेलेबल ये पूरा जो स्ट्रक्चर इन्होंने पैदा किया है। मार्टिन साहब की मैंने जब तकरीर सुनी तो मैं तो चौंक गया कि ये आपके दिल में सिर्फ प्रेम से आप समाज की समस्या नहीं हल कर सकते, ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपका बच्चा बीमार होता है, बच्चे से प्यार तो बहुत करते हैं, मगर इलाज तो डॉक्टर ही करेगा ना, जिसके पास ज्ञान होता है। तो एक शिद्दत हमारे दिल में है, हमारे अंदर एक जज्बा है, मगर जब वो राहुल वाजपेयी हैं, मार्टिन साहब हैं, बाकी जो डॉक्टर साहब हैं, उनकी सपोर्ट से ये जब ये एक मूवमेंट आप यहाँ पर जन्म देंगे तो ये इसकी नकल करने वाले लोग भी पैदा हो जाएंगे। हर अच्छे काम की मी टूइज़म शुरू हो जाती है, तो समाज को फ़ायदा ही होगा इससे। और मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक जहनी या मॉरल फेलियर नहीं है, ये जिस्मानी बीमारी है। और जिस तरह आप डायबिटीज़ को ट्रीट करते हैं, जिस तरह आप अस्थमा को ट्रीट करते हैं, उसी तरह से आपको एक एडिक्ट को देखना चाहिए। उसको अगर आप उस नज़र से देखेंगे और वो छुपाते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, तो ये हार 21वीं सदी के दूसरे डेकेड में, जब दुनिया में, विश्व में अभी आप उस कगार पे आ गए हैं जहाँ पर एक न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट की संभावना है, तो एक पैंडेमिक का डिस्पेयर है, उसमें सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ आदमी झुकेगा। तो ये छोटे मोटे जो आपको लगते हैं काम, ये बहुत बड़े काम हैं। पूजा भट म्हणाली की साधारणपणे लोक माझी ओळख एक अभिनेत्री, चित्रपट निर्माता आणि कार्यकर्ता म्हणून करून देतात, पण मला असे म्हणायचे आहे की पूजा भट दारूच्या व्यसनातून सावरली आहे असे लोकांनी म्हणावे। कोविडचा काळ सुरू होता, त्याचवेळी मारहाण, एकमेकांचा अपमान, मानसिक स्वास्थ्य, नैराश्य, आत्महत्या अशा घटनांमध्ये वाढ झाली होती। सुशांत सिंग राजपूतचे प्रकरण ज्या पद्धतीने दाखवले गेले त्यावरून लोक घाबरून गेले की आम्ही मदत कशी मागणार, आम्हाला गुन्हेगार ठरवले जाईल। समर्पण सारख्या केंद्रांची आज नितांत गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं। And at the time when I had people telling me, if you love me, you'll have a drink. It's my anniversary, have a drink. Come on, I just had a baby, have a drink. Come on, you can crack it. You've been sober for 6 months, have a drink. I called up a place called Deepak Wines one day. I was one of their best customers. It's in Pali Hill, by the way. If anyone doesn't have an alcohol problem, call them. And a friend of mine had come over, and I don't keep alcohol, but I'm happy to serve it to you. And I called them, and the guy picked up the phone, and I said, hello. He said, हाँ ma'am. So I said, हाँ red wine है. So he said, किसको चाहिए?
तो ऐसे मेरे दोस्त आ रहे हैं यार, रेड वाइन है, मैं नहीं पी रही हूँ, मैंने शराब छोड़ दी। एंड ही सेड हाँ मैंने पढ़ा था पेपर में कि आपने छोड़ दी, और जब भी आपका फ़ोन आया और मैंने आपकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिल घबरा गया। And I was so moved by that. So I said the kindness of strangers, a man whose livelihood depends on selling me alcohol, and I was one of his best customers. But he didn't want me to stop drinking. And they were my very own who wished that I would fall, wished that I would stumble, wished that I would kind of just take that risk so they could say, see, we knew it wouldn't last forever. But I think what I did, and I was born again with that affliction, but I was born with that switch where I said no, and then I stayed on course. I made the world my AA class. I felt, and I often asked him, I said, if daddy was made from the female perspective, would society give a woman the opportunity or the privilege of leaving her child home because she's an alcoholic and coming back after 17 years to claim her baby? Society would not give us that opportunity. So I think that women drink in private and we don't dare acknowledge our flaws, because even alcoholism ek mard ki jaagir hai. Recovery is a male privilege. Talking about your weaknesses, your scars, your frailties is a male privilege in India. And I thought that I owed it to people to tell them that, you know what, if this could happen to me, it's going to happen to you. But if I could recover, you can too. And I just felt that we need to end the stigma. The pandemic was devastating for all of us. Suicide, mental health, addiction was on a peak. And yet we lived in a country and a government that criminalized addicts, criminalized any sort of addictive behavior, took the discourse on mental health back into the boondocks with Sushant Singh Rajput's suicide. The unfortunate tragic event that happened became into a media fracas and circus, and took the whole discourse on mental health and addiction back into the dark ages. And I think that a society that does not acknowledge that, unfortunately, when a society is broken, the reason that governments can't win the war on drugs is because drugs work. That bottle of alcohol would give me more respite than my broken marriage, than all the men I had met, or the career highs or lows. The truth is that the alcohol delivered, people did not, society did not. So I blotted myself out in it. So I just feel that we need to be able to share each other's frailties more, to be able to celebrate them. I'm often told on Twitter, what do you know, you're an alcoholic? And I'm like a recovering alcoholic and proud of it.